Hello everyone, I hope all of you are doing well and I am also good. This is my day 10 video of 75-day hard challenge of spoken English. And today, first of all, I learned 5 new words. And 9 a.m. I read newspaper, and 11 a.m. I listen speaker speech, and after that I learn today uh, some new words related to travel, and I also will share you some new words and sentences. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बस से यात्रा करता हूँ, तो यू कैन से दैट, सो यू कैन से दैट आई ट्रेवल बाई बस. यू कैन आल्सो से दैट आई टेक द बस. सेकेंड, क्या ट्रेन का समय बदल गया है? हैज़ द ट्रेन शेड्यूल चेंज्ड? मेरा टिकट कहाँ काटा जाएगा? वे विल माई टिकट बी चेक्ड? यह सीट रिजर्व है, इस सीट पर कोई बैठा है, तो यू कैन से दैट, सो यू कैन से दैट दिस सीट इज रिजर्व. आपके पास यात्रा के लिए टिकट है क्या? यू कैन से दैट डू यू हैव अ टिकट फॉर ट्रेवल प्लीज. मैं पैदल आता हूँ, यू नो आई वॉक. यू ऑल्सो कैन I come on foot. कृपया अपना सामान सावधानी से रखें. प्लीज़ कीप योर बिलोंगिंग्स केयरफुली. कृपया अपने सामान पर नज़र रखें. प्लीज़ कीप एन आईज ऑन योर बिलोंगिंग्स. दिस इज some sentence, some new words related to travel. Okay, thank you for watching my video.